रिपोर्ट्स करवानी है वो लिख के देती हूँ, वो रिपोर्ट्स करवा लीजिए आप, उसके बाद वापस आना दिखाना रिपोर्ट्स लेके। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? नहीं कोई नहीं। रिपोर्ट मैं उर्वी का भाई हूँ, तो आप रिपोर्ट मेरे को दे दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना इसमें? लिम्फोमा है। लिम्फोमा? आप मैडम से पूछ लेना, मैं बात कर लेता हूँ। मैडम जी, ये मेरी बहन का रिपोर्ट है, हम 2 दिन पहले आए थे यहाँ पे, तो इसमें लिम्फोमा आया है। मैंने थोड़ा बहुत चेक किया नेट पे, तो अब क्या है कि उसको ना पहले थोड़ी ऐसे हिस्ट्री नहीं है, वो पहले बहुत जल्दी कर जाती है ऐसी चीज़ों में। तो आप ऐसा हो उसको कोई भी छोटी मोटी बीमारी में टीबी वगैरह जो आपको सही लगे आप थोड़ा ऐसा बोल दीजिएगा उसको, वरना फिर वो ऐसे में घबरा जाएगी ज़्यादा, उसको दिक्कत हो जाएगी। देखिए हम ना पेशेंट से ऐसे छुपा नहीं सकते कि उनको क्या बीमारी है। आपकी कंसर्न सही है कि वो पैनिक करेगी, ठीक है, लेकिन वो पेशेंट है तो कुछ भी होगा। अगर हमको कोई भी डिसीजन देना है, जैसे कि कोई भी सर्जरी के रिलेटेड, तो वो पेशेंट है तो वो उनका डिसीजन होना चाहिए क्योंकि उनके साथ होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये आपको एडवाइस करते हैं कि आप उनसे छुपाइए मत, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो पैनिक ना करे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको किसी काउंसलर से बात करवा देंगे, तो मतलब वो नॉर्मल रहे, ठीक है। लेकिन हम उनसे छुपाएंगे तो फिर ये गलत हो गया ना। ठीक है मैडम, जब आप देख लीजिए, आप बोले तो आपके भरोसे पे ले आया, तो मैं एक बारी। हाँ आप टेंशन ना लीजिए, हम ऐसा लगेगा तो उनको काउंसलर से भी बात करवा देंगे, तो कुछ नहीं होगा। ठीक। मैडम जब बात कर लीजिए। डॉक्टर क्या हुआ है? भैया तो कुछ बोल नहीं रहे मुझे। आपको ना लिम्फोमा करके एक होता है, वो हुआ है। ये लिम्फोमा क्या होता है? लिम्फोमा एक तरह से कैंसर होता है, ठीक है, लेकिन घबराइए मत, वो ठीक हो जाएगा। आपको अभी फर्स्ट स्टेज में है, तो इतना टेंशन मत रखिए। हम आपको दवाई देंगे, फिर अगर ज्यादा लगा तो उसकी सर्जरी करके हम लोग निकाल भी सकते हैं, तो घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं ठीक तो हो जाऊंगी? हाँ आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, वो ले लेना रेगुलर, और वापस रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना, ठीक है। Hello everyone, we have just seen a role play, and based on that role play I'll discuss that what medical ethics principles were involved in that role play. So medical ethics, it is an applied branch of ethics that analyzes the practice of clinical medicine and related scientific research. So medical ethics answers to the questions like what is the right course of action in medical decision making when there are competing interests at stake, and how should we balance individual autonomy with the greater good of the society when it comes to health policy. So these questions are answered by the branch of ethics, which is medical ethics. There are 4 principles of medical ethics. The first is autonomy, that is, patient have the right to choose their treatment and make decisions. Second is beneficence, that as a doctor we should always work in the benefit of the patient. Then non-maleficence, that is, as far as possible we should never try to harm the patient. And finally justice, we should be very fair in dealing with the patients. Now this particular role play, it was revolving around the patient's autonomy. So that I will discuss somewhat in detail. Patient's autonomy means the patient has a right to make his or her own decisions based on his or her personal values and beliefs. However, there are certain exceptions to patient autonomy where healthcare providers may override a patient's autonomy in certain circumstances. For example, in emergency situations, like in cases where a patient is, say, unconscious or unable to communicate, then the healthcare provider may need to make medical decisions on their behalf to preserve their life or prevent further harm.
So in those emergency situations, patient's autonomy may be override. Then in patients with mental incapacity, so if the patient is deemed mentally incompetent or lacks decision making capacity, then the healthcare provider may need to make decisions on their behalf. In some cases, a legal guardian or a surrogate decision maker may be appointed to make decisions on behalf of the patient. Another exception to patient's autonomy is public health concerns. Now, in rare cases, sometimes the public health concerns may override a patient's autonomy. For example, if a patient is diagnosed with a highly contagious disease, so the healthcare provider may need to take measures to prevent the spread of the disease, even if it goes against the patient's wishes. So that is again an exception to the patient's autonomy. And finally, if patient for the patient's best interest, sometimes the autonomy may be overridden. Like if the patient's healthcare decisions go against their best interest, the healthcare providers may need to intervene. Like if a patient refuses a life-saving treatment, then the healthcare provider may need to override their decision in the best interest of the patient to save his or her life. Now, it is important to note one thing, that these exceptions should only be made after careful consideration and with the goal of promoting the patient's well-being. Healthcare providers should always strive to respect their patients' autonomy and involve them in the decision-making process whenever possible. So coming back to that role play, the question is that should a doctor tell the wrong diagnosis to a patient, as was in the scene in the role play? So the probable answer is no. A doctor should not mislead a patient by telling them the wrong diagnosis. Now, while it is important to consider the emotional and the psychological impact of a diagnosis on a patient, but withholding or misrepresenting information can ultimately harm the patient's trust in their healthcare providers and their ability to make informed decisions about their care. Instead, healthcare providers should work to communicate sensitive information in a compassionate and empathic manner, providing the patient with appropriate emotional support and resources. Thank you.